Hello students, कैसे आप सभी? I hope you are good students. So today we are going to start clauses. So clauses वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चा. clauses क्या होती हैं, कैसे यूज की जाती है सेंटेंस के अंदर. So let's begin students. A clause is a part of a sentence which contains a subject and a finite verb of its own. So clause क्या होती है बच्चा? एक सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या कंटेन करता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और उसके अंदर एक फिनिट वर्ब भी होती है अपनी. Then read the following sentence. The company shouted out those employees whose services were hired on a temporary basis. So इस sentence के अंदर can clearly be divided into two parts. और clauses आप बोल सकते हो like the company and shunted out those employees then whose services were hired on a temporary basis. So note that each of the two parts like clauses has a subject and finite verb भी उसके अंदर दी गई है. Then types of clauses के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चा 3 types of clauses को. First one is principal clause. So principal clause के अंदर this is also known as a main clause or an independent clause भी आप उसको बोल सकते हो. It has a finite verb with a subject and convey complete sense. Therefore it can stand on its own. For example, I believe it. तो ये कंप्लीट सेंस है बच्चा अपने आप में. आई बिलीव इट, तो इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट मेन क्लोज रखती है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोला गया है. सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज also called a dependent clause. ये depend रहती है बच्चों. is a group of words that has a finite verbs with a subject but does not convey complete sense on its own. ये अपने आप में complete sense रखते ही नहीं है. So it can thus never be a sentence in itself. It merely adds some informations to the main part like close of the sentence. Usually it appears immediately after the subordinate conjunction. For example, that he is honest. So these words do not make a complete sentence. But when added to I believe it, these words add to its meaning. I believe it that he is honest. So I believe that he is honest. So that he is honest से complete नहीं बन रहा. Even I believe it माना तो हम समझ जाते हैं कि वो हम किसी honest की बात करें, like वो honest है. A subordinate clause of is 3 types like noun clause, relative clause and adverb clause. So we will be learn about them after we learn about the third clause. Then next है बच्चा subordinate clause. Subordinate clauses होती हैं ऐसी independent clauses which are joined by coordinating conjunctions are called coordinate clauses. इसलिए इनको coordinate clauses भी बोला जाता है क्योंकि join रहती हैं. Then in a sentence there are often 2 or more main clauses combined together by coordinating conjunctions. Each clause makes a separate statement and has equal importance in a sentence. For example, mother was at home and children were at school. तो आप देख पा रहे हो बच्चा, दोनों यहाँ पर independent clause हैं. आप यहाँ पर बोलेंगे मदर वॉज एट होम, तो दिस मीन्स इंडिपेंडेंट क्लोज मेन क्लोज हो गई. देन सेकंड सेंटेंस के अंदर चिल्ड्रन वर एट होम, ये भी इंडिपेंडेंट है लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्लोज के अंडर में आती है. सो बोथ दोनों के दोनों दीज आर क्लोजेस कैन स्टैंड अलोन. सो आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से हमने इनको ज्वाइन किया है. एक्सरसाइज है बच्चा, इसमें आपको करना है अंडरलाइन द क्लोजेस इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट MC for main clause and SC for subordinate clause and CC for coordinate clause के लिए लिखना है. तो याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर MC, SC और CC लिखते हुए आपने आगे लिखना है, पहचानना है. फर्स्ट यू हैव टू कि फाइंड आउट द क्लोज, मेन क्लोज कौन सी है, देन अंडरलाइन करना है सेंटेंस के अंदर से, फिर उसके आगे आपने लिखना है मेन क्लोज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लोज के अंडर में वो आती है. सेंटेंस राइट कर लेते हैं बच्चों. Priya had a nice basketball for fruits which I like most. I wanted to play Scrabble, but my sister was keen to playing Monopoly. Dabu likes music that is composed by Rahman. The lady who is wearing a black dress is my aunt. Use the washing machines carefully as I showed you yesterday. Ravi has a car but prefers to travel by bus. Rinku left for Gujarat last month and she has not returned since. The boy who came yesterday wore Menu's brother.
Subordinate clauses are divided into 3 types based on their function. Subordinate clauses बेटा जिनकी हमने बात की थी ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन, इट इज कॉल्ड द नाउन क्लोज. अ नाउन क्लोज इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज, इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इट फंक्शन एज अ नाउन एंड कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what she believes in is surprising. This noun clause is the subject of the verb is. I do not know where the red box is. This noun clause is a direct object of the verb know. Then next में है, the wonderful thing about toddlers is that they all get along so well. This noun clause is a subject complement of a verb is. Not that the subjects, the wonderful thing about toddlers is a noun phrase, so it has no finite verb. Next है बच्चा, lonely old people likes speaking to whoever will listen. This noun clause is the object of the preposition to का इसके अंदर यूज करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों, अ नाउन क्लोज इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड. नाउन क्लोज और क्या इंट्रोड्यूस करती है बच्चा, ऑफन करती है इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द कंजंक्शंस एज इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, लाइक दैट, इफ, वेदर, ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है. लाइक ही सेड दैट ही न्यू द न्यू नेबर. ही आस्क्ड इफ आई वुड इंट्रोड्यूस हिम टू द न्यू नेबर. ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू अ न्यू नेबर. नेक्स्ट है बच्चा, अ नाउन क्लोज may be introduced by a WH word such as like why, what, which, when, where, how, etc. For example, he asked me why the child was crying. He asked me who was in charge of the operation. They decided which charges had to be paid. How do I know what you think until I hear what you have to say? He asked me where I went last week. She wanted to know when the doctor would come. तो अभी हमने जो सीखा है बच्चों उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज इसके अंदर आपको करना है. अंडरलाइन द नाउन क्लोज इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच क्लोज. First is, he informed me that the result would be out very soon. It is not true that he died young. When they left is not certain. The news that he had topped the list proved to be wrong. I did not agree to what she said. I want to know why you were absent yesterday. Realizing that he had made a mistake, he apologized. एडजेक्टिव क्लोज, तो एडजेक्टिव क्लोज को पढ़ेंगे बच्चा. एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है? एडजेक्टिव क्लोज को हम जानते हैं इज ऑल्सो नॉन एज अ रिलेटिव क्लोज की तरह. रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज आप बोल सकते हो इनको दोनों को. ये परफॉर्म्स करती हैं ऐसे फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन की तरह. एंड नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द एडजेक्टिव क्लोज इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. फॉर एग्जाम्पल, अरुण गेव अनीता ब्रेसलेट which was made of gold. So in this sentence, which was made of gold जो बच्चे है वो क्या है? is the adjective clause and its antecedent is bracelet. The जो antecedent of the adjective clause है comes just before the clause ही आता है, means clause के बिल्कुल पहले आ जाता है बच्चों. An adjective clause is generally introduced by a relative pronoun as like who लगाते हुए whom, whose, which, that इनका use करते हैं. For example, he is the boy who helped me in completing my project. I have finished the book which that you bought for me. The boy whom you want to be friends is considered to be mischievous. Note में देख लेते हैं बच्चा, like यहाँ पर who, whom and whose are used for persons and which for things के लिए यूज किया जाता है. That can be used for both persons के लिए भी और things के लिए भी हम यूज करते हैं. Then an adjective is also introduced by a relative verb like where, when, why. I do not know the shelf where the file is kept. The time when you could move freely has now passed. I do not know the reasons why he was angry. These adjective clause qualify like place, time and reason को बताते हैं. Defining and non-defining clauses क्या होती हैं बच्चों? So defining relative clause are given essential informations about the person or things that is being talked about. Without these informations, we would not be able to identify the person or thing. Definite relative clause बताती है बच्चा essential information, जो जरूरी information है उसके बारे में बताती है. किसी person की हो सकती है information, किसी thing की हो सकती
है तो उसके बारे में बताना। मीन्स वहाँ की इंफॉर्मेशन के बिना वी वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस पर्सन को भी और उस थिंग को। सो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफाइन रिलेटिव क्लोज का यूज करते हैं। सो लुक एट द एग्जांपल्स। द मैन हु वाज कॉट स्टीलिंग द बाइक इज इन द पुलिस स्टेशन। द गर्ल्स whom you were talking to is my friend. Next है बच्चा, non defining relative clause gives some extra information about a person or thing which is not necessary for completing the meaning of the sentence. Usually a non defining clause is separated from the main clause by commas. Like यहाँ पर इसको अलग करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है बच्चा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज को। एग्जाम्पल में देखते हैं, कॉमा लगाकर इसको यूज करते हैं। लाइक गांधी जी, who is called the father of the nation, adopted non-violence as a weapon to fight the Britishers. We went on a picnic to Goa, which is a union territory. Okay, so next है बच्चा exercise, combine करना है following pairs of sentences by using suitable relative pronouns को लेकर हम रीड आउट कर लेते हैं। लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय यू गेव अ मोबाइल फोन टू हिम। दिस इज माई अंकल गोपाल, ही इज लिविंग इन अमेरिका। शी हैज लॉस्ट द पेन, आई गेव इट टू हर। द गर्ल इज weeping, हर बुक इज torn into pieces by her younger brother. The man is a great poet. We met him yesterday at the school function. We visited Porbandar. Gandhiji was born there. And rabies is generally found in dogs. It is dangerous diseases. We went on a picnic to Mussoorie. It is in the north of India. Don't play with street dogs. They are dangerous and can harm you. I visited the exhibitions. Many shops were selling costly toys there. Next exercise है बच्चे, इसके अंदर आपने करना है complete the following definitions using correct relative pronoun का यूज करते हुए। An adjective is a part of speech dash describes a noun. An adverb is a part of speech dash describe a verb and adjectives or another verb. A confectioner is a person dash sells sweets, breads and biscuits. A sanctuary is a place dash people can enjoy watching different kinds of birds. A barometer is an instrument dash tells about the weather. An escalator is a moving staircase dash carries people up and down between floors. A crèche is a place that parents can leave their young children while they are at work. A doctor is a person that treats sick people. You may live dash you like in this building. The elephants dash are approaching to the river seen to be thirsty. The Hava Mahal is a historical building dash was made by Swai Jessing and he ran away with fear dash a figure covered in black whispered to her. सो बच्चे यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, चैप्टर भी यहीं पर फिनिश होता है। तो अच्छे से आप चैप्टर को पढ़ेंगे, थॉरोली देखेंगे क्या क्या इसकी डेफिनेशंस है ताकि आप इजीली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाए स्टूडेंट्स खुद से। सो यू हैव टू कंप्लीट होल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ स्टूडेंट।